Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Now today I am going to explain class 11 chapter number 7. The name of this chapter is equilibrium and today topic is polyprotic acid. Often acid molecules have more than one ionizable H. These are called the polyprotic acid. ऐसे एसिड जिसके अंदर H की यानी हाइड्रोजन की जो संख्या है वो एक से ज़्यादा हो उसे हम पोलीप्रोटिक एसिड के नाम से जानते हैं. The ionizable H's may have different acid strength और भी equal. जो ionizable हाइड्रोजन है वो उसकी वजह से जो एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिफरेंट हो सकती है. 1H इज इक्वल टू मोनोप्रोटिक. जो 1H है यानी कि यदि एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो हम उसे मोनोप्रोटिक के नाम से जानते हैं. यदि 2H प्रेजेंट हो तो हम उसे डाइप्रोटिक के नाम से जानते हैं. यदि 3H प्रेजेंट हो तो हम उसे ट्राइप्रोटिक के नाम से जानते हैं. फॉर द एग्जाम्पल HCl is called the monoprotic acid. H2SO4. In H2SO4 the number of the hydrogen is 2, so we are called as a diprotic acid. And H3PO4 is triprotic acid because the number of the hydrogen is 3 are available here. Now polyprotic acid ionize in step. जो polyprotic acid है वो कुछ step के अंदर ionize होता है. Each ionizable hydrogen removed sequentially. जो हाइड्रोजन है वो सीक्वेंटली आयनाइज होते हैं. रिमूविंग ऑफ द फर्स्ट हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली मेक्स रिमूवल ऑफ द सेकेंड हाइड्रोजन हार्डर. जो फर्स्ट हाइड्रोजन है उसे तो रिमूव करना इजी होता है लेकिन जो सेकेंड हाइड्रोजन है उसे रिमूव करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो थोड़ा सा हार्डर होता है. फॉर द एग्जांपल H2SO4 इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड. जो H2SO4 है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड देन द कम्प्लीटली ऑफ द HSO4 माइनस आयन. HSO4 के अंदर जो हाइड्रोजन है वो एक है तो इसीलिए जो H2SO4 है इसमें ये जो हाइड्रोजन है वो कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है बेटा, इसलिए ये क्या होगा HSO4 की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. नाउ द नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ. कुछ फैक्टर हैं जो कि एसिड की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं. फॉर द एग्जांपल एक्सटेंट ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ एंड द polarity of the HA bond. Strength of the HA bond decrease as the energy required to break the bond decrease, and that is the HA becomes a stronger acid as the size of the A increase down a group in the periodic table. The HA bond strength decrease and so the acid strength is increase. As electronegative of H as electronegativity of A increase, the strength of the acid is increase. Now size increase. What is the relation between the size increase and acid strength? So the size of the HF is lower than the HCl and the size of the HCl is lower than the HBr and the size of the HBr is lower than HI. So acid strength increase when the size will be increased. So the strength of the HF is lower than HCl and the strength of the HCl is lower than HBr and strength of the HBr is also lower than HI. तो HI का जो साइज़ है बेटे वो सबसे बड़ा है, इसीलिए जो उसकी स्ट्रेंथ है वो भी और दूसरे की तुलना में ज़्यादा होगी. नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रलिज्म इंक्रीज. CH4 इज लोअर देन NH3, NH3 इज लोअर देन H2O एंड H2O इज लोअर देन HF. एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. यहाँ पर जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ. Now general traits in acidity. Now the next is the general traits. In general traits we are doing study that the stronger an acid is at donating H plus ion. जो stronger acid जो होते हैं वो H plus ion को donate करते हैं. The weaker the conjugate base is at accepting H plus ion. जो weaker होते हैं, जो conjugate base होते हैं वो इस H plus ion को accept कर लेते हैं. Higher the oxidation number of an acid
stronger is the oxy acid, then H2SO4 is greater than H2SO3 is HNO3 is greater than HNO2. Cations are stronger than acid, then neutral molecules and the neutral acid are stronger than the anions. So H3O plus ion is greater than H2O. H2O is greater than OH. NH4 is greater than NH4 plus ion is greater than NH3 and NH3 is greater than NH2. Bases have an opposite trend. जो bases होता है उनमें opposite trend होता है acid की तुलना में. Now common ion effect, reducing the concentration of hydrogen ion is called the common ion effect. जो concentration of hydrogen ions है उसका यदि हम रिड्यूसिंग की स्टडी करते हैं, रिड्यूसिंग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है उसे कॉमन आयन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है. इट कैन बी डिफाइंड एज अ शिफ्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम एंड एडिंग अ सबस्टेंस दैट प्रोवाइड्स more of an ionic species already present in the dissociation equilibrium. Common ion effect is based on the Chartelli's principle. Chartelli's principle में हमने देखा था कि जो common ion होते हैं वो bases को affect करते हैं. Hydrolysis of the salt and the pH of their solutions. Salt are formed by the reaction between the acid and the bases in the defined proportions with the afterwards undergo ionization in water. एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो जो सॉल्ट हैं वो बनते हैं, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 9th क्लास के अंदर हमने इसकी डीपली स्टडी किया है. द कैटायंस एंड द एनायंस फॉर्म्ड ऑन आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट्स आइदर एग्जिस्ट एज हाइड्रेट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन और इंटरैक्ट विथ वाटर टू रीफॉर्म corresponding acid and bases. The latter process of the interaction between the water and the cations or the anions or both or the salts are called the hydrolysis. Now we can say that the degree of the hydrolysis is independent of the concentration of the solution and pH of the such solution is determined by their pK values. जो इनका pH है वो pK values के according हम determine कर सकते हैं. The pH of the solution can be greater to 7 if the difference is the positive and it will be pH is equal to 7 plus half pKa and pKb. Now the buffer solution is a very important topic. What to understand by the buffer solution? So the solution which resists changes in pH on dilation or with the addition of a small amount of the acid and the alkali are called the buffer solution. Buffer solution are the prepared from the knowledge of the pKa and the pKb or bases and the controlling the ratio of the salt and acid or salt and the bases. Now solubility equilibria or the Springly solution salt. Now solubility of salts depend on the lattice enthalpy of the salt and the solution or the solution enthalpy of the ion in the solution. For a salt is dissolved in a solvent and the strong forces of attraction between its ion must be overcome by the ion solvent interaction. The solution enthalpy of ion is referred to as the solution which is always negative, that the energy is released in the process of the solution. Now the amount of the solution enthalpy depends on the nature of the solvent. तो solution enthalpy है वो depend करती है solvent के nature के ऊपर. In case of non-polar solvents, the solution enthalpy is small and is not sufficient to overcome the lattice enthalpy of the salt. Salt does not dissolving in a non-polar solvent as a general rule. For a salt to be able to dissolve in a particular solvent is the solution enthalpy must be greater than its lattice enthalpy so that the latter may be overcome by former. Solubility of the salt depends on its temperature. जो solubility है salts की वो temperature पे भी depend करती है. For the example, solubility product constant is given by Ksp is equal to Mp plus ion bracket x sq minus ion y is equal to x s
bracket x and ys bracket y. Now ksp is equal to xs yy as x plus y, and as x plus y is equal to ksp upon xx yy, and therefore the s is equal to ksp upon xx y is a bracket upon ksp upon xx yy bracket 1 x plus y. The term k is the equation is given by the q when the concentration of one or the more species is not the concentration under the equilibrium. Obviously then the k is equal to q, but the otherwise it gives the direction of the process of the preparations or dissociation. Now common ion effect of the solubility of the iron salt, it is the last topic of this chapter. If we increase the concentration of any one of the ion, यदि हम किसी भी आयन की कंसंट्रेशन के बारे में स्टडी करते हैं और यदि हम ये देखते हैं कि यदि हम उस आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, then it should combine with the ions of the opposite charges, and some of the salt will be predicted once again. Similarly, if the concentration of one of the ion is decreased, more salt will dissolve to increase the concentration of both the ion, where it will be again participated, and the solubility of the salts of the weak acid like the phosphate increase at the lower pH. जो solubility है salts की वीक एसिड के अंदर यदि हम सॉल्ट की सॉलिबिलिटी को देखते हैं लाइक फॉस्फेट, इट इंक्रीज एट द लोअर pH. दिस इज बिकॉज एट लोअर pH of the concentration of the anion decrease due to the protonation, the enanthium will increase the solubility of the salt. Now the protonation is the process in the addition of the proton to an atom molecule or ion forming the conjugate ion. So here the chapter number 7 equilibrium is completed. I hope कि ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा. Question answer and internal question I will be sent in your group as a PDF form. Thank you very much student.